So in this video we are going to learn the uses of should. The uses of should. Okay, so what is the meaning of should in Hindi? The should means चाहिए. Okay, should means चाहिए. So for example if I say कि मुझे जाना चाहिए. Okay, मुझे जाना चाहिए. तो मुझे जाना चाहिए in English we will say I should sorry we use I means मुझे. I should go. I should go. मुझे जाना चाहिए. मुझे खाना चाहिए. I should eat. आपको सोचना चाहिए. You should think. You should think. So this is how the meaning of should is चाहिए. Okay, the meaning of should is चाहिए. Now the second is should be. Now what is the meaning of should be? Should means चाहिए. Should means चाहिए. Be means होना. Okay, तो should be means होना चाहिए, not चाहिए होना चाहिए. Okay, let's write some examples like मुझे आपके पास होना चाहिए. I should be with you. I should be with you. आपको हॉस्पिटल में होना चाहिए. You should be in the hospital. Okay, so this is the use of should be, but there is a second use of should be which is the passive form of should. Okay, let's understand this. Like you know the meaning of should, that is चाहिए. Okay, so this is the inactive form. Okay, this is an active form and the passive form of should is should be. And how do we use it? Okay, let's learn this. Like मुझे ये करना चाहिए. मुझे ये करना चाहिए. तो इस इन इंग्लिश वी विल से आई शुड डू इट. ओके, आई शुड डू इट. आई शुड डू इट मीन्स मुझे ये काम करना चाहिए या फिर मुझे ये करना चाहिए. सो नाउ आई एम गोना चेंज इट इनटू पैसिव फॉर्म. आई कैन से दैट ये काम मेरे द्वारा किया जाना चाहिए या फिर दिस वर्क या फिर इट शुड बी. इट should be. Third form of do is done. It should be done by me. It should be done by me. Okay, it should be done by me means the second of use of should be. The second use of should be is किया जाना चाहिए. किया जाना चाहिए. Okay, किया जाना चाहिए. बिकॉज शुड मीन्स चाहिए एंड शुड बी मीन्स किया जाना चाहिए. ओके, आपको ये बर्गर खाना चाहिए. ओके, यू शुड ईट दिस बर्गर. और इन पैसिव फॉर्म वी विल से ये बर्गर आपके द्वारा खाया जाना चाहिए. तो वी विल like this will come first because in voice, passive voice, we use the object first. So this burger, in place of should we will write should be. This burger should be. The third form of eat is eaten because in passive voice we always use the third form. This burger should be eaten by you. Okay, if we don't use the by you, still it makes sense. This burger should be eaten, which means ये बर्गर को खाया जाना चाहिए. ओके, सो दिस इज़ हाउ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इट. सो गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल कंटिन्यू इट द यूज ऑफ शुड हैव एंड शुड हैव बीन. Okay, the use of should have and should have been. So this is how you I can say that you can completely understand the all uses of should.